eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on frozen food, boon or curse. Most important subject today we have. So in this evening webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Dr. Monisha Dixit, Associate Professor, Department of Agat Tantra, Uttarakhand Ayurvedic University, Rishikul Campus, Haridwar. Namaskar and welcome you, sir. Next, I want to welcome Dr. P. Sudhakar Reddy, Professor and Head, Department of PG Studies in Sastavit, JSS Ayurved Medical College from Mysuru. Namaskar and welcome you, sir. Next, I want to welcome Dr. Mrinal R.K., Associate Professor, Department of Dravya Global Institute of Ayurveda from Rajkot. Namaskar and welcome you, sir. So once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar on frozen food, boon or curse. So we are waiting to hear from the eminent speaker. So once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar. Namaskar, over to Pavanji. Thank you very much, sir. Before I invite Dr. Monisha Dixit ji, I would like to request Professor V.K. Agnihotri, sir. Though he is in emergency, but I salute him also to join the webinar. Welcome, sir. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. And namaskar, respect to all the dignitaries, those who are the today's guest speaker of our webinar's topic, and also all the persons, those who have joined our today's webinar platform and will join and will visit our YouTube and archive also. I welcome Dr. Manisha. I welcome Professor P. Sudhakar Reddy ji. I also welcome Dr. Akre ji. We do hope, Dr. Maurya ji. We do hope that this is really a direct subject of our ladies, because their most of the life time is being spent there in the kitchen. So whether the frozen food is in any way useful for the human health or not, this is the main and very important topic of today's webinars. But the fact is, as far as the Ayurveda is concerned, we have got no information regarding this frozen food or even the processed food. The idea is that Nati Sheet, Nati Ushun, Upadigdha, Paryushit, these are the words used. These type of food should be avoided, irrespective of the food poisoning or the Sanyog Viruddha Ahar. But we are sure that today's galaxy of the guest speakers will throw light and enlighten our knowledge regarding this issue. So with no delay, I welcome all the guest speakers and extend our good wishes for their best presentation, along with the Professor Shant Shukla ji and all those who have joined our webinar today, especially Professor Pawan Sharma ji for his timeless and tireless efforts is made us to reach even 596, I think. So thank you so much. Over to Professor Pawan Sharma ji for further proceedings. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you very much for your kind words. Today is our 598 and 99th webinar. And tomorrow we will reach. Thanks for the correction. I was just webinar. I missed studies twice, so I couldn't add on. So it was 96. It said study itself. So thanks for your correction. We are reaching just near too short to 600. Thank you so much. Thank you very much, sir. Tomorrow will be 600th, and that will be Healthy Holy Kavi Sammelan. All Ayush Kavi will. Sir, what will be the time? What will the time of Kavi Sammelan? Dr. Ritu Singh was asking. Will it be 8 p.m.? Thank you. Thank you. You will communicate the link to her also. Thank you. Okay. Thank you.
Thank you. Please continue. Now I would like to request Dr. Manisha Dixit ji, first time on platform. Welcome, Dr. Manisha ji. Now this platform is yours. Madam Radulata ji, Madam Manisha ji, please do join every day and please communicate us what topic is suitable to you. Welcome, Manisha ji. Time limit is 15 minutes. You can extend up to 20, but 15 minutes is sufficient, I hope. Welcome. नमस्कार सभी के लिए धन्यवाद डॉक्टर पवन, आपने इतना सुंदर और इतना ज्ञानवर्धक मंच सभी के लिए प्रदान किया है। आप सभी जो इस मंच से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मृदुला जी, डॉक्टर विष्णु जी और अग्निहोत्री सर हमारे गुरु रहे हैं, तो उन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इस मंच पर एक ऐसे टॉपिक को लेकर के हमें अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिल रहा है जो काफी हद तक हम लोग इन सब चीजों को अपने दिनचर्या में यूज करते हैं, और लेकिन इनके नुकसानों के बारे में हम कई बार नहीं सोच पाते। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें थोड़ा सा जो समय मिला है, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि फ्रोजन फूड बून है या कर्ज है, एकदम हम किसी भी चीज को निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो अग्निहोत्री सर ने अभी अभी बोला जैसा कि हमारे आयुर्वेद में इस तरीके के शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे पर्यूषित है, उपनिग्ध है, या जो हम बासी भोजन का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के भोजन का इस्तेमाल हमारे लिए विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और मेरे मतानुसार यदि हम आचार्यों के किसी भी तर्क को निराधार साबित करते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो जितने भी तर्क संहिताओं में लिखे गए हुए हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक आधार है। तो आज इस टॉपिक पर मैं सबसे पहले एक प्रश्न आप सभी लोगों से जो इस मंच पर विराजमान हैं, एक ये रखना चाहूंगी कि जो हम फूड प्रिपेयर करते हैं, जो ये हम फ्रोजन फूड बना रहे हैं, एक हमें इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि वो फ्रोजन फूड किस तरीके से बन रहा है, और आयुर्वेद में इस तरीके के भोजन को क्यों कंडम करा गया है, क्यों कहा गया कि हमें फ्रेश फूड ही खाना चाहिए। देखिए, जहां तक मेरा अपना विचार है, मुझे लगता है कि फ्रोजन फूड का जो मार्केट है वो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और मार्केट इंक्रीज करने का मतलब होता है कि जिसमें हमें इंडस्ट्रियल मेथड्स से कोई ना कोई मुनाफा हो रहा हो। तो जैसा हमारे आंकड़े बताते हैं कि लगभग 250 बिलियन तक इसका 2020 में मार्केट था, और संभावना है कि अगले 5 सालों में ये लगभग 366 बिलियन तक ये मार्केट क्रॉस कर जाएगा। हम देखते हैं कि जो चीज हम मार्केट में जो एमएनसीज होती हैं वो इंक्रीज करना चाहती हैं, उसका हम एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद में कभी भी कोई रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव जैसे शब्द नहीं थे। जहां से जापान से ये जो माइक्रोवेव आया, अब वही जापानीज लोग उस माइक्रोवेव को कंडेम करते हैं। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि हम जैसे जैसे फ्रोजन फूड के मार्केट को बढ़ाना चाह रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप ही कुछ ही वर्षों में इतनी बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे कि हम इसे खुद ही कंडम करना शुरू कर देंगे। तो एक जैसा कि पवन जी ने हमें 15 मिनट का समय दिया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसी में ही हम इसे समराइज कर लें, क्योंकि आप सभी विद्वजन हैं और सारे लोग आयुर्वेद के परिचित हैं और जानते हैं। तो एक छोटी सी चीज ये है कि हम जो फ्रोजन फूड प्रिपेयर करते हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। नॉर्मली आप देखते हैं कि जो फ्रोजन फूड होता है उसमें से हम एयर को इवैक्यूएट कर लेते हैं, और एयर इवैक्यूएट करके हमने फूड को उसके अंदर पैक डाउन कर दिया, और जब आपको यूज करना है तब आप उसे डायरेक्टली उसे मील को डालिए गर्म पानी में, या वो जिस तरीके से आपको पकाना है, और वो रेडी हो जाएगा। होता क्या है कि इस तरीके के फूड मटेरियल को हम 3 स्टेजेस में प्रिपेयर करते हैं। जो पहली स्टेज हमारी कहलाती है वो हमारी होती है प्री ट्रीटमेंट स्टेज, दूसरी फ्रीजिंग स्टेज, एंड आफ्टर दैट हम फ्रोजन स्टेज में जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जो भी भोजन है, जब हम उसको अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस तो आएंगे ही। जैसे कि आपने पहले प्री फ्रीजिंग ट्रीटमेंट उसको दिया,
अब आप देखते हैं कि आजकल आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर कलर की सब्जियां और फ्रूट्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे नॉर्मली कहना चाहिए एक तरीके से आर्टिफिशियल कलर। और हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम जितनी कलरफुल चीज होती है और जो देखने में सुंदर होती है हम अट्रैक्ट होते हैं। आप फ्रोजन फूड की पैकिंग देखेंगे तो पैकिंग भी इनकी बड़ी अच्छी कलरफुल और अच्छी बनाते हैं ताकि लोग हैं या बच्चे हैं वो अट्रैक्ट होकर के उसको खरीदें। और दूसरा क्या है कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, हमारी भागम भाग की जिंदगी है, साथ में ये एनर्जी सेविंग है कि हम अपना टाइम किचन में क्यों वेस्ट करें, उतनी देर तो हम कुछ सोशल मीडिया पे लगेंगे या हम और कुछ काम करेंगे। तो हमने, या हम अपने ऑफिस से जब 10 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी करके आए हैं तो हमने कहा भी फ्रोजन फूड बना लें। लेकिन हमें थोड़ा, जब हमें इसके बारे में ज्ञान होगा कि जो चीज आप खा रहे हो उससे क्या नुकसान है, तो इसमें जो हमारी प्री फ्रीजिंग वाली प्रक्रिया है उसमें जो मेथड्स हम यूज करते हैं वो होते हैं डिपिंग या ब्लैंचिंग, या हम यूज करते हैं हीटिंग ट्रीटमेंट्स या फिर साइटो प्रोटेक्शन। इसके बारे में मैं एक एक वर्ड आपको थोड़ा सा बताती जाऊं, क्योंकि YouTube पे जैसे कि आप डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे भी इसको देखते हैं। तो ब्लैंचिंग हम नॉर्मली आप घर में भी यूज करते हैं, बहुत सारी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं उनको हम गर्म पानी में या स्टीम में उनको ब्लेंच कर लेते हैं ताकि उनके जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं उनको हम रिड्यूस कर पाए। दूसरे जो हम काम करते हैं इसमें वो हम करते हैं कि हीटिंग ट्रीटमेंट देते हैं। हीटिंग ट्रीटमेंट का मतलब है कि जैसे आपका मीट हो गया या मीट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, फिश हो गई, तो उनके ऊपर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या हम जो उनकी इनिशियल फॉर्मनेस होती है मीट के ऊपर जो आफ्टर थॉइंग प्रोसेस बनती है उसको करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फिर थर्ड प्रोसीजर जो हम यूज कर लेते हैं कई बार वो जो हमारे होते हैं डिपिंग। जैसे आपने फ्रूट्स को देखा होगा कि जो हमारे केन्ड फ्रूट्स आ रहे हैं, पाइनएप्पल हैं या और भी मार्केट में रेडी फ्रूट्स होते हैं या शुगर सिरप्स होते हैं, उनको हम एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर डिप कर लेते हैं। तो ये हमारे प्री ट्रीटमेंट्स हैं। उसके बाद हम जाते हैं फ्रीजिंग प्रक्रिया पर कि आप जो फ्रीजिंग प्रोसेस है, जैसे हमारे यहाँ आप घर में यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन, ऐसे यदि आपको बहुत हाई लेवल पर इस फ्रोजन फूड को फ्रीज करके रखना है तो उसमें हम कई मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि जैसे आप इधर उसे चाहे तो कॉन्टैक्ट रेफ्रिजरेटर्स में यूज करें कि आपने शेल्फ्स में डाल दिया उसको, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि उसको कम टेम्परेचर पर जहां कोल्ड एयर का फ्लो हो एक साथ, जैसे कि हमने -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एकदम कोल्ड एयर डाली और कोल्ड एयर डाल करके फिर आपने उसको फ्रीज कर लिया। और या फिर आप क्या करते हैं, हम जो क्रायोजेनिक फ्रीजिंग है जो हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके आप उन चीजों को फ्रीज करके रख लेते हैं। होता क्या है कि इन सब प्रोसेस से हम उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं और शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के बाद आप उसके लिए लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और जैसा कि एक रूल है हमारा, थंब रूल कह लीजिए, कि यदि आपने किसी चीज को बहुत कम टेम्परेचर पर उसको रख रखा है तो उसकी फ्रीजिंग लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि ऊपर हमारे जितना हाइट पर हम जाते हैं बर्फ की तरफ, यदि कोई बॉडी भी वहां पर नीचे दब जाती है तो बहुत टाइम तक सेफ रहती है। तो यही कंसेप्ट मुझे लगता है फ्रोजन फूड में इस्तेमाल करा गया कि यदि आपने माना 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसे फ्रीज कर दिया तो वो लगभग आपका 4 दिन से लेकर के 20 महीने तक वो आपका प्रोटेक्टिव फॉर्म में रहेगा। फिर इसी तरीके से यदि आपने क्या करा कि और ज्यादा उसको डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर को, तो वो उस कंडीशन में और ज्यादा दिन तक आपका हो सकता है 2-3 साल तक भी वो फ्रोजन फूड ठीक रहे। लेकिन अब इस तरीके के फूड में जहां जो कि हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में जो हमारा वर्णन है भोजन का, बल्कि कह लीजिए कि एक जो पाक शास्त्र के विषय में कहा गया, इसको शास्त्र कहा गया, पाक कला या पाक शास्त्र। तो कोई किसी भी चीज को शास्त्र या कला हम तब कहते हैं जब उसमें कोई ना कोई एक साइंस छुपी हुई होती है। और वो साइंस क्या है, जो हमारे आचार्यों ने कहा कि भोजन कैसा होना चाहिए। तो हम यदि आयुर्वेद में जाएं तो भोजन हमारा ऐसा होना चाहिए कि उसमें सत्व हो, जो आपके शरीर को स्ट्रेंथ दे, जो बल्य हो, व्रंगण हो, सुपाच्य हो, और साथ में आप जिस रीजन में रह रहे हैं
वो उसकी वेजिटेशन, स्पेशली जिस ग्लोबल रीजन में आप रह रहे हैं, हर एक व्यक्ति के लिए वहां के लिए एक अलग वेजिटेशन होती है। यदि हम ईस्ट को बिलोंग करते हैं, वेस्ट को या नॉर्थ को या साउथ को, तो हर एक व्यक्ति का वहां के जलवायु के हिसाब से भोजन बताया गया। या आप देखते हैं जैसे हमारे यहाँ दिनचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या को यदि आप देखें तो हर एक ऋतु में जो हमारे बुजुर्ग थे वो हर एक डिफरेंट टाइप का भोजन बनाते थे कि भाई ये वाली इस रस के चीजों को आपको इस ऋतु में इस्तेमाल करना है। हमारी 6 रस है, तो हमें दिख रहा है कि यदि सर्दी का मौसम आने वाला है गर्मी के बाद, तो हम उस समय क्या करेंगे, हम किसी को नहीं कहेंगे कि भाई आप ठंडा भोजन करें, हम ये कहेंगे कि आप सूप्स लीजिए, आप इस तरीके की चीजें लीजिए जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो रही है, क्योंकि मेटाबॉलिक फायर आपकी बहुत अच्छी है उस टाइम। या जो ऋतु इस समय चल रही है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि भाई अब हमारा कफ का जो है वो जितना हमारा संचय हो चुका है उसका प्रकोप का समय है, तो आप ऐसा भोजन इस्तेमाल करें कि जिससे कफ की वृद्धि हमारे शरीर में जो हुई है वो और ना बढ़े। लेकिन फ्रोजन फूड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब हम देखते हैं फ्रोजन फूड को छोड़ करके और भी चीजें हमें पूरे 12 महीने अवेलेबल हो रही हैं। इसी प्रकार से हमारा जो गर्मियों का सीजन होता था तो उसमें हमें कहा जाता था कि भाई इस समय पित्त का वृद्धि होगी तो आप ठंडी चीजों का इस्तेमाल करिए, पुदीना खाइए, वाटरमेलन खाइए या मेलन लीजिए, या जो आपके शरीर में पित्त को कम करे। दूसरा, जो आपका फ्रेश फूड होता है उसमें क्या है, प्राण। और प्राण का मुझे लगता है आयुर्वेद में हमारी जो प्राण वायु कह लीजिए या जो वाइटल एनर्जी है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। यदि हम प्राण की बात करें तो जब हम ये सारे प्रोसेसेस करते हैं जो मैंने आपको भी बताए कि चाहे आप प्री फ्रीजिंग कर रहे हैं, फ्रीजिंग कर रहे हैं या पोस्ट स्टेज में जा रहे हैं, इन डिफरेंट प्रोसेसेस के दौरान हम उस प्राण को, उस वाइटल एनर्जी को डिटेरियोरेट करते जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब आप खुद भी देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या बताया गया है संस्कार के विषय में, कि संस्कारों ही नाम गुणांतराधानम, कि संस्कार जब आप किसी चीज को प्रोसेस करते हैं तो उससे गुणों की वृद्धि होती है, लेकिन यदि आप प्रोसेस्ड फूड यूज करते हैं तो उसमें गुणों की वृद्धि नहीं होती। वो उस फूड की केवल शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और उसमें से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को कम करने के लिए केवल गुणांतराधान कर रहे हैं। इसमें हम गुणांतराधान तो कह ही नहीं सकते कि फ्रोजन फूड के अंदर कोई गुणांतराधान हो रहा होगा। दूसरी चीज क्या होती है कि इस तरीके के भोजन में, जहां तक हमारा जो त्रिदोष थ्योरी है वात पित्त कफ की, तो हम कहेंगे कि दोष हमारे इम्बैलेंस हो जा रहे हैं। अधिकतर ऐसे भोजन हमारे शरीर में जाकर के वात की वृद्धि कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे शरीर में ये वाले भोजन है, आपने देखा कि इसमें हमने अस्कॉर्बिक एसिड में डिप करा, किसी को हमने ब्लैंचिंग करा, किसी को थॉइंग करा, जहां हमें मीट को प्रिजर्व करना था तो हमने उसकी एक फर्मिंग करी। तो ये सब प्रोसेस के दौरान हुआ क्या कि आपने जब इस फूड को लॉन्ग टर्म लिया तो आपने अपनी मेटाबॉलिक फायर को धीरे धीरे डिक्रीज कर लिया, या आप कह लीजिए जो आपकी जठराग्नि है, ये जो आपका गट माइक्रो बायोम है, उस सिस्टम को आपने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते करते उसको चेंज ही कर डाला। अब जब आप रूटीन में बहुत लॉन्ग टर्म तक इस तरीके के भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग रूटीन में ही खाते हैं कि एक टाइम हम पे बनाने का समय नहीं है तो हम फ्रोजन फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, या बच्चे हैं जो हमारे कभी हॉट डॉग्स खा रहे हैं, फ्रोजन पिज्जा खा रहे हैं, पोटैटो चिप्स खा रहे हैं, या आपने बस तुरंत डीप फ्रीज्ड फ्रेंच फ्राइज आ रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जाकर के हमारे शरीर में जो आप देख रहे हैं कि एसिडिटी की गैस, ब्लोटिंग, बेल्चिंग, इन सब बीमारियों को बढ़ाती जा रही है। उसका कारण यही है कि एक तो हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, दूसरा हम जो इस तरीके के विरुद्ध आहारों का सेवन कर रहे हैं, वो सब चीजें मिलकर के हमारे शरीर में कोई ना कोई प्रकार से आम की उत्पत्ति कर रही है, स्रोतों का अवरोध कर रही है और हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति कर रही है। जैसा आप जानते हैं कि फ्रोजन फूड लगातार यदि हम लें तो उससे नुकसान क्या है। नंबर 1, हम यदि बात करें तो ये हमारे सोडियम लेवल को इंक्रीज करते हैं। रूटीन में आपको कितना सोडियम चाहिए, हार्डली 230 मिलीग्राम पर डे, और ये हम देखते हैं कि जो भी
इस तरीके के मटेरियल होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ टेस्ट एनहांसर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। वो सारी चीजें 600 से 800 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंग हमें सोडियम बॉडी में रिलीज करती है। तो ये क्या करेंगी, हमें हाइपरटेंशन क्रिएट करती है। उसके साथ साथ ट्रांसफैट्स होते हैं, ट्रांसफैट्स हार्ट डिजीज को पैदा करेंगे, ओबेसिटी को पैदा करेंगे। और इसके अतिरिक्त ये जितनी भी फूड है हमारे, जो एक चीज पाक कला के बारे में कही गई कि आपका जो भोजन बनाते समय भाव होता है, जो मेंटल स्टेटस होता है, या हम जिसे कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना, तो वो जो प्यार होता है वो कहीं इस तरीके की फ्रोजन फूड में हमें नजर नहीं आता। तो इसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी कि आप जब लगातार इन चीजों को ले रहे हैं तो एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो गई, आपकी टेस्ट कोई नहीं है। जो डिफरेंट टेस्ट हम कोशिश करते हैं कि जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, हम फ्रेश लीव्स ला रहे हैं, जितने आप 5 स्टार होटल्स में जाइए, या अभी बहुत सारे लोग हम में से कुछ मास्टर शेफ भी देखते होंगे, तो उसमें मैं देखती हूँ कई बार कि वो लोग कोशिश करते हैं कि आपका जो कलर है, जो एरोमा है, जो फ्रेग्रेंस है, या जो फ्रेशनेस है फूड की, वो मेंटेन रहे। तो क्या ये फ्रेशनेस, ये एरोमा, ये उसकी जो कहना चाहिए स्वीटनेस भोजन की, ये हमें फ्रोजन फूड में मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इस कंडीशन में यदि आप लगातार फ्रोजन फूड यूज कर रहे हैं तो आप अपने आप को बीमारियों के गड्ढे में धकेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक तरीके का कर्ज ही है। हाँ, मानवता के लिए हम कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम बून कह के ही इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फाइनली जब उससे रोग उत्पत्ति होने लगती है तब हम उसे कहते हैं कि ये तो कर्ज है। तो मेरे हिसाब से मेरी जो अपनी ओपिनियन है उसको मैंने आपके समक्ष रखा, और मैं अब इस मंच पे आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और हरिओम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़े सरल शब्दों में और पूरा क्लियर किया, इसके लिए मैं बड़े आभार, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आपका। टू द पॉइंट बोलते हुए, और क्या हमारी प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या कन्वीनियंस है, क्या हार्म्स हैं, आपने सभी बिंदुओं पे बहुत अच्छा एक पूरा प्रकाश डाला। मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी से उनके कमेंट्स की आशा करता हूँ। Thank you. Namaskar, Professor Pawan Sharma ji. Really, Dr. Manisha touched all the area which were belonging to the pros and cons of the frozen food. बल्कि एक बात और बढ़िया कहना चाहूंगा, इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि मैं नहीं समझती कि गुणांतराधान होता है। मैं उस शब्द उस स्टेटस को एक नया शब्द दूं, गुणांतराधान नहीं, गुण ऋणांतराधान हो जाता है। तो सही गुण ऋणांतराधान, जो बेसिक गुण होते भी हैं हमारे उस प्रिपरेशन में, फूड में जो ताजा बना होता है, उसमें ऋणात्मकता बढ़ जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, और उसकी मेरिट्स वो डिमेरिटेरियस हो जाता है। बट आप बहुत अच्छा बताने लगे हो, आप बहुत अच्छा बोलने लगे हैं, बहुत ही विश्वास के साथ। तो मुझे खुशी हुई जान की, और अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, सारा एरिया कवर किया। और अगर हम वही शास्त्र की बात जब करेंगे तो निश्चित ही बात है, हमने कहा ना, प्रसंस्कृत किया हुआ भोज्य पदार्थ या ऐसी कोई भी चीज जो फ्रोजन है, हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर लाएंगे, फिर गर्म करेंगे, तब खाएंगे, तो उसमें फिर वस्तु में उसकी जो गुण है, रस गुण विभाग का, उसके जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएंगे। और जैसे आजकल जो चीजें चल रही है, कार्बोरेटेड टाइप चलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स सारा होते हैं, तो ये कब तो मैन्युफैक्चर होते हैं, कब डिस्टिलरी में बन के पैकेट बन गया, कब या डैमेज में गोडाउन में पड़े रहते हैं, कब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर पड़े रहते हैं, फिर स्टोर होते हैं, धूप पे रखे रहते हैं, बाहर लोग लगा के दुकान लाते हैं, उसके बाद दौड़ते हुए आते हैं बच्चे, और फिर डीप फ्रीज जो चिल्ड होते हैं वो मांगते हैं और पी जाते हैं। टोटल बॉडी की फिजियोलॉजी खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये मैसेज आना जरूरी है कि हम धीरे धीरे, खैर अवेयरनेस आ रही, लोग अपने प्राकृतिक तरफ आ रहे हैं, और सीजनल फूड, अभी हमारे प्रोफेसर रेड्डी साहब बताएंगे इस पर, उनका 4 फार्मूला मैंने रट लिया है, when to eat, why to eat, where to eat, and how much to eat.
ये गाइडलाइन है, हमने उनकी बात पहले ही कह दी, वो अभी कहने जा रहे हैं। तो अगर ये चीज रख लेंगे तो हम कभी भी 31 दिसंबर को रात को 12 बजे वाटरमेलन नहीं खाएंगे, जो कि एक फैशन स्टेटस हो गया है कि साहब शादी ब्याह में है 3230 दुकानें लगती हैं, हर एक में होता है एक छोटा सा स्टमक, 40 मिनट के अंदर उसमें इतना बम्बार्डमेंट हो जाता है 40 प्रकार की 30 प्रकार की चीजों का, वो अपने हाथ से अपने मुंह में चीज ले जाके अपने स्वास्थ्य को खत्म करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, आपने हमारा गौरव बढ़ाया है, इसलिए में खुशी है। और डॉक्टर वेदभूषण भी हमारे जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ओवर टू पवन शर्मा जी। Thank you very much, sir. Now I would like to request our beloved Professor Sudhakar Reddy, sir, Professor and Head Department of Swasthya in JS Ayurved College, Mysuru. Welcome, Sudhakar ji. Welcome. Namaskar, sir. Namaskar. Good evening to all. Namaskar. Respected Pawan Sardi, VK Agnihotre, sir. नमस्कार। And Surya Prakash, sir. Very good evening to all. Today's topic, if we speak in negative way, the total companies like frozen companies may attack us. But still, we know that the frozen foods are not helpful for body, but in mechanical life, we are now beyond of this one. Because every सर home, थोड़ा अपने फेस की तरफ लाइट कर लीजिए या फेस को लाइट की तरफ कर लीजिए। मेरा कैमरा ऐसी है सर, कैमरा का हर बार थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हमारा रिकॉर्डिंग में अच्छा आना चाहिए ना, आपका नॉलेज अच्छी है, आपका चेहरा अच्छा है, लेकिन हमारे प्रकाशित तो नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा। हमारा कैमरा का प्रॉब्लम है, वो कैमरा का प्रॉब्लम नहीं, या तो आप फेस को लाइट की तरफ ले, इधर यू जस्ट टर्न योर फेस टुवर्ड्स लाइट और टर्न द लाइट टुवर्ड्स फेस, इट विल बी यस समथिंग। बैक लाइट बंद कर दिया, बैक लाइट बंद कर दिया, यस फाइन, लिटिल बिट फाइन। आई थिंक कैमरा का प्रॉब्लम है वो। हाँ, ऐसा कुछ करिए तो हाँ ना, मेरे रिकॉर्डिंग में अच्छा हो जाएगा ना हमारी। यस, अभी थोड़ा दिख रहा है। Yes, it's wonderful. Yeah, thank you for your this modification. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your suggestion. And as we know, today is the National Frozen Food Day. It is observed on the name of our bird of Clarence Frank Birdseye, American inventor, who invented fast food freezing machine. And we know ahara is very important for everybody, body and growth, but the same food, if you are taking a wrong way, definitely it may spoil our health. So with these words, I would like to share my slides. So is it visible? Sharma sir, as usual. Yes. Yes, sir. You can go for slideshow. Yes, sir. So slideshow, it is in the slideshow only, sir. Not visible, sir. No, it is visible, but in PowerPoint mode. 1 minute. Now, sir. Yes, excellent. Yes, sir. Thank you, sir. And before me, Dr. Manisha Madam spoke everything, whatever I wanted to tell. But I just wanted to add few things. As we know, freezing is one of the oldest and most commonly used means of food preservation. It has been known to be an extremely effective means of preserving food for extended periods since Paleolithic, Neolithic times, when man used ice and snow to cool food. The cooling effect of salt and ice was first publicly discussed in 1962 by the chemist Robert Boyle. But this technology was certainly known in Spain, Italy, and India in the 16th century only. The manufacturing of ice in shallow lake using radiant night cooling and the preservation of ice and snow in ice houses was a common practice in large countries' houses in the Victorian times.
Ice was a product only for the privileged, and ice desserts were extremely fashionable and a sign of great wealth. But now it became everywhere part and parcel of the human life. And in more temperate climates, the preservation of ice and snow was obviously difficult, and it was only with artificial cooling that frozen food became available more widely. In 1755, William Cullen was first made ice without any natural form of cooling by vaporizing water at low pressure. This was followed by Jacob Perkins in 1834, who made the first ice-making machine operating on ethyl ether. In the following 30 years, refrigeration technology developed rapidly, spearheaded by the likes of Joule and Kelvin. The first patents related to freezing food were filed. And freezing of foods, what does it mean? A process in which the temperature of the food is lowered so that some of its water crystallizes as ice. This occurs in freezing, drying, freeze concentration of juices and Your voice is not coming, doctor. अग्निहोत्री सर. प्रोफेसर रेड्डी आपकी आवाज बंद हो गई है. once again, I hope now it will, sir. Sharma, sir. Okay, sir. So the greatest use of freezing of food is, as Manisha Madam told, the freezing is only to preserve them or extend their storage life. We can say that the freezing or frozen foods are type of the preservatives. And as freezing prevents growth of microbes, frozen foods can be stored for longer periods. There is no need to use preservatives or additives to extend shelf life. So in the starting, in the frozen foods, they find out that the food can be preserved for longer periods and there may not be any preservatives chemical. But later on, the chemicals also they are using, that was again disadvantages. Freezing allows flexibility in manufacture and supply, means that food can be preserved at near its optimum quality for distribution and transportation. Low temperature, that is minus 18 degrees centigrade, domestic freezers, minus 28 degrees in the primary wholesale cold storage, or as low as minus 60 degrees in some food cold storage, slow down the spoilage process. This is very great advantage of that only the frozen foods. That spoilage process, that's called enzymatic autolysis, oxidation, or bacterial spoilage that would otherwise occur at room temperature or even at chill temperature. And consumers often ask whether thawing, that's called process of ice snow refreezing, is detrimental to food quality. The answer is that when done properly, this is hygienically, thus preventing the microbial contamination during thawing, the effect of multiple freezing on quality is usually not very serious. Frozen foods are wide array of foods. Frozen foods can include your uncooked veggies, ready to eat main courses, fried bite-sized snacks, meats, and so on. They differ in the way they are produced, stored, preserved, etc. Because we have so many types of frozen foods are available. That depends upon the how they are producing, how they are storing, and how they are preserving, and what preservative they are adding. They may consume for various reasons,
such as availability, conveniences, taste, and so on. As Manisha Madam also told, so this will the attractive color, attractive flavors, and all these things, and wherever you go, it's available. For this availability, convenience, taste, and so on, the people are behind of the frozen foods. Now, let us see what are the health problems of frozen foods. They retain sodium. They are the risk factor for hypertension. All frozen foods, they retain the sodium in the process of that one, and that sodium intake slowly may increase the sodium level in the body. That may be risk factor for the hypertension. Trans fat found in frozen foods is the risk factor for again heart diseases. Reduces the nutritive value. Freezing cooked foods again definitely will reduce the nutritive value of the food. And they are high in preservatives, as I told. And the starting of the centuries, when they find out the frozen foods, they were not added any chemicals to preserve it. But later on, they are started adding the preservatives, which is having the ill health effect on the body. And weight gain. Foods that are frozen have a very fat in content. These foods are high in calories because the proportion of fats to carbohydrates and proteins in them, on the other hand, is extremely low. Foods such as frying bite-sized frozen snacks, etc., are unhealthy and fattening. So, consuming regular basis the frozen foods also leads to the weight gain among the youngsters. And this for diabetes. Frozen food items are preserved with starch. This is again one more drawback. This starch aids in giving the food flavor and texture. Before the starch is digested, it is transformed into the sugar. That's why the sugar level may increase, and that is risk for the people of middle age people and those who are having the family history of the diabetes. And risk of cancer. The preservatives used in the frozen foods also can lead to cancer. And chance of getting headache. Many frozen foods contain MSG, MSG, which is using in the preservative foods, which could have harmful side effects for those sensitive to it. Research suggested that additives has the potential to give the headaches. So these are the health problems of the frozen foods. It is list is very small, but when they are taking regular basis, it may damage all the organs slowly. And frozen meals, biggest advantage, we can say that don't have to cook them yourself. But biggest drawback is that according to clinical nutrition study, people who cook for themselves experience more intense positive emotion. This is very important. When you cook and when you eat, definitely you'll have positive emotions, less intense negative emotions, and less worries. But when we are depending upon the frozen foods, ready-made foods, we may not experience that emotion, which is again given by the cooking. That's why cooking is very, very important, that we having the positive emotions on the body. That food may be digested very fast, very easily, and also gives a mental satisfaction. And the use of chemicals in freezing, such as chlorofluorocarbons and hydrofluorocarbons. These are the again in the recent centuries they are adding these chemicals in freezing items. They have health deterioration effects. Frozen foods does not kill bacteria, only slows down the spread. This is very, very important to remember, that they never kill the bacteria, only they just slows down the spread of the bacteria and growth rate also, so that the food cannot be spoiled within few days. And as per Ayurveda, the frozen foods description are available. This is my correlation. Continuously taking atishita ahara, we can say frozen foods considered as a type of riddhahara. Frozen foods may act as a dushi visha, slowly accumulating poison in the body. Frozen foods may aggravate vata dosha and may create vata rogas. And to conclude, I can say the fresher, the better. Nothing is better than home cooked meal. Frozen foods are low in nutrition. Frozen foods are non-seasonal and kept frozen for a long time. Their nutritive value drops with time, definitely. And mostly frozen foods is preserved using starch, which over time converts into the glucose. And frozen food contains sodium, which leads to high blood pressure and leads to chronic illnesses.
frozen foods are deprived of nutrients and lack minerals and vitamins and are not seasonal. Fresh cooked food, fruits and veggies are always better. Occasionally, consumption of frozen foods may be adopted, not on regular basis. As vegetables are having short lifespan, they can be kept in refrigerator for 2 to 3 days. This is only suggestion mine, because only for vegetables and those who are getting early spoilage can be kept for 2 to 3 days. And avoid freezing cooked food. This is very, very important. Once you prepare morning food, again you are keeping in the refrigerator and using. This can be avoided. And if accustomed to take frozen foods on regular basis, now what we are doing here, nowadays, because of Prajna Parada, we know very well, but that time, the mechanical life making us to go for the frozen foods. So when you are taking frozen foods on regular basis, we can go for periodical body purification, that's called Rutu Shodhana, to prevent their cumulative toxic, that Dushi Visha effects. So this, if you follow the Rutu Shodhana, and even if you're consuming regular basis also, the problem may not occur. And also regular physical exercise also will be helpful to maintain the health of those who are taking frozen foods regularly. And frozen foods are not natural. This is very, very important. And they always can curse the health, but not a boon always. Minimize the use of frozen foods. And we can say lastly, east or west, home food and fresh food is the best. Thank you very much, sir, for giving this opportunity. I hope I conveyed the message. Excellent, excellent, and very loud and clear message. Very loud and clear message. Everybody should use home and fresh food. This is the louder message everybody can take. And naturopathy, the food with life, the concept is there, where they are expecting life in the germinated food. They are considering the life in germinated food. That's aura, that negativity, that positivity clearly differs from the dried food or frozen food. Definitely. Agnihotri sir. I would like to request Agnihotri sir for comment. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. I just reached home from that place. We were sitting in our in-laws' house there. Well, Professor Reddy ji, you justified with your knowledge, with your presentation. I may have some guidance from you that your sambar vada, your masala dosa, whether these are recommended in our North India or not, because we used to take. As long as it is said that apne kshetra ki hi bhojan karna chahiye. Would you like to say something on this point? Though Yes, yes. Sir, you are our South Indian dosha, South Indian idli and sambar, always good for all over India in all seasons, sir. Thank you. I was just scared whether you can restrict me not to go for the South Indian good items. Thank you so much. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. Namaskar. We have at present 10 minutes. If anybody would like to add regarding frozen food, please raise your hand so we can call you. Anand Katti ji is today with us. Professor Anand Katti from Bangalore. Welcome, welcome Anand ji. Thank you, sir. Thank you. Welcome. You have taken my name and I have only a few things to tell. So largely the effect of food is not only on the body, it is also on mind. It has to be kept in mind that it is the manas also that get nourished from the food, and this frozen food are not going to do any good for them. So therefore, on that front, it is a curse only. It is not a boon. And the another thing, Dr. Reddy sir is especially mentioned about Rutu Shodhana. But we are in a situation where we cannot run away from the frozen food, these preserved food, because the society, we see this being told in Charaka Samhita, the Gramya Dharma has increased so much so that our lifestyle has modified. We have people working at the high altitudes in glaciers, protecting the boundaries, the army, etc. For them,
fresh food cooking service to be considered. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Anandji, thank you very much. Anybody would like to say anything? I remember those days that my grandfather did not allow the entry of fridge and steel utensils in his life. My mother was very angry on that, but he did not allow up to 1988. He was there and he did not allow the entry of fridge. बासा खाने को मिलेगा, जो भी हैगा बासा खाने को मिलेगा, अभी बनाओ अभी खाओ. In connection with the fridge or the refrigeration, we cannot completely avoid it also, because even when Acharya Charaka says Himavan Aushadha Bhuminam, Aushadha Bhumi जो हिमालय से जो उगते हैं वो अच्छा है. वो कारण में एक पॉइंट आता है, वहां पे नेचुरल रेफ्रिजरेशन मिलता है प्लांट के लिए, सो दे आर मोर प्रोटेक्ट. तो रेफ्रिजरेटर इफेक्ट तो है, to protect the saviryata avadhi of any plant is certainly going to be, but it has to be natural. That's what it has to remember. Very rightly you are said. Very right. Anybody else would like to last comment? Agnihotri sir, your conclusion. Concluding, because we are going to start next at 9 sharp. I feel that even no query of that nature there in the chat box, only the appreciation is available for both the guest speakers, Dr. Manisha and Dr. Professor Reddy. That means everybody of us are doing Pragya Parad. Everybody. Yes, and they are confessing not to speak in the way. they are confessing and they are not speaking because, and moreover, one of your friend once told that, Sir, Pawan Sharma sir, whether now your house is equipped with refrigerator or not. I do remember. So right from after 1988. So the idea is that we are all almost depending more or less on microwave and fridge. Even the milk, as Dr. Katti told that Himwan Aushadham, that's very true. But this snow-covered hills there in Himalayas, that may not be available there in Kerala. So very naturally, that natural status, I mean, near to 0 or -4, -8 or -38 in Kargil and Lahaul Spiti, etc. So that is a different issue. And that especially goes for the Aushadhi. The altitude where that means our herbs are there. So they are of the great virya and value, prabhav. But as far as the edibles are concerned, that prepared things, if they are put in the fridge and then taken back to the normal room temperature and then given some heat for the refreshing and then taking, so this process itself exposes the whole of the prepared food. That's why पिछले में तो पहली रोटी गाय को देने के बाद भोजन करा लिया और चौका लगा दिया. चौका लग गया माने आखिरी रोटी कुत्ते को, जानवर को, बिल्ली को, जिसको देना दे दी. अब उसके बाद कोई आते हैं मेहमान, अतिथि आते हैं, तो वेल यू हैव टू वेट, यू गो विद द शुगर कैन जूस, शरबत पी लीजिए जैसा सीजन हो. और चाय का तो प्रचलन था ही नहीं, या तक रहे तो तक दे दिया, मट्ठा पिला दिया. उसके बाद शाम का भोजन आपको मिल जाएगा 4-5 बजे, 6 बजे के आसपास. आज 5 बजे, इवन बाई 4-5 PM लंच हो पाता है, कभी सेमिनार कभी कुछ और. तो सिस्टम बदल गया है. जो ताजा भोजन होता है 12 बजे का, आप बताइए इन द लंच एट व्हाट टाइम द सैलेड इज कट, 8 AM, 9 AM and consumed at 3 PM. It itself, even being fresh, it becomes the little bit spoiled. So never go for the this cut salad if it is not well packed, and even then packed thanda garam. So we have to now correct ourselves. This is the high time just to